So in today's video, I'm gonna show you the whole process how I produce my YouTube videos. So it contains mainly 3 steps. These steps are very important in order to achieve a high quality video. And the steps are scripting, shooting and editing. Number 1. और स्क्रिप्टिंग के लिए जरूरी है पहले मूड में आना. नोटी हो रहा के हैं नोटी हो रहा. और मूड में आने के लिए मैं चलाता हूँ एक प्यारा सा गाना और शुरू कर देता हूँ अपनी स्क्रिप्टिंग. बंदी ओवरसीज वेरी ऑन द नीज डबल मेरा पैसा डबल मेरे जीज सिंगल तेरा यार कुड़ी डबल मेरी फीस शॉरी करती पॉलिटिक्स और भाई तेरा. एंड वंस द स्क्रिप्ट इज रेडी इट्स टाइम फॉर शूटिंग. ये वाली नहीं, ये वाली. शूटिंग करते टाइम हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपनी लाइटिंग और कैमरा एंगल का रखना है. लाइटिंग और कैमरा एंगल हमारा प्रॉपर होना चाहिए. तो मैं यूजुअली काफी छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूँ टू कीप माई ऑडियंस इंगेज्ड लाइक दिस वीडियो. अब अपनी फाइल्स को लैपटॉप में ट्रांसफर करके करते हैं वीडियो एडिटिंग शुरू. सो द सॉफ्टवेयर विच आई यूज फॉर एडिटिंग इज कैपकट पीसी. और वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, ट्रांजिशंस, मोशन बैकग्राउंड्स, creativity and my skills. So our video is finally edited and it's time to show you the final reveal. So here are some type of logos that every designer should know about. First up we have wordmark logo. This type relies solely on text like Coca-Cola's iconic script or Google's clean typography. Simple yet effective. Next we have lettermark logo. These use initials or abbreviations like IBM's bold letters or HBO's sleek design. They are perfect for brands with long names. Then there is emblem logo. These incorporate text within a symbol or icon like Starbucks iconic mermaid and Harley Davidson's classic badge. They are timeless. Moving on to the abstract logos. These use geometrical shapes or abstract forms like Nike swoosh or Adidas iconic 3 stripes. They are versatile and memorable. Last but not the least, we have mascot logos. These feature illustrated characters or figures like KFC's Colonel or Michelin's Bibender. Which kind of logo you like the most? Let me know in the comments. Thank you so much for watching this video. If you really like the video, make sure to hit that like and subscribe button. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.